अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग बच्चों के लिए चिकन बिरयानी बना रहे हैं, लेकिन ऐसा वैसा बिरयानी नहीं, स्मोकी चिकन बिरयानी, एक स्पेशल अंदाज में नवाब्स किचन के स्टाइल में। चलिए देखते हैं आसानी से कैसे बनाते हैं। स्मोकी चिकन बिरयानी शुरू करने से पहले सारे चिकन्स को हम लोग गार्ड पिटाएंगे। सारे चिकन्स को हम लोग मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। पहले इसमें मैरिनेशन के लिए कर्ड ऐड करेंगे। नेक्स्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट रेड चिल्ली पाउडर, नेक्स्ट और थोड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर, नेक्स्ट इसमें हम लोग थोड़ा क्यूमिन पाउडर भी डालेंगे। नेक्स्ट स्पाइसीनेस के लिए गरम मसाला भी ऐड करेंगे, ऑल स्पाइसेस पाउडर। टेस्ट के लिहाज से सॉल्ट भी डालेंगे। अच्छी तरह मैरिनेट होने के लिए सारे चिकन्स में हम लोग लेमन जूस भी ऐड करेंगे। मैरिनेशन परफेक्ट होने के लिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारे चिकन्स को हम लोग 2 घंटे तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे। उसके बाद बिरयानी प्रोसेस शुरू करेंगे। अब स्मोकी चिकन बिरयानी बनाने के लिए बॉल तैयार है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम लोग रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे।
इन मसालों के साथ साथ हम लोग चॉप्ड जिंजर भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइस्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस थोड़ा ब्राउन शेड में आते ही हम लोग इसमें स्लाइस्ड ग्रीन चिली ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइस्ड टमाटोस ऐड करेंगे। तो सारे चिकन्स 2 आवर्स तक परफेक्टली मैरिनेट हो गया है। अब वक्त आ गया है कि इस चिकन्स को बाउल में डालने का। स्मोक डालने के लिए हम लोग एक बॉक्स में कोल लेके रखे हैं, इसमें घी ऐड करेंगे और इसको स्मोक के साथ ढक देंगे। जब कोल के साथ हम लोग घी ऐड करेंगे, जो फ्लेवर आएगा वो सारे पीसेस को, मतलब जो भी चिकन्स है उन सभी को लगेगा और बहुत ही मज़े का रहेगा, बहुत ही अच्छा स्मेल भी रहेगा। इस स्मोक को हम लोग 3 मिनट्स तक ऐसे ही ढक के रखेंगे, उसके बाद राइस इस पे ऐड करेंगे। माशाल्लाह लिड ओपन करते ही इतना अच्छा खुशबू आ रही थी, वही खुशबू सारे चिकन्स को भी लगेगा। अब इसमें जो कोल रखे थे वो रिमूव करेंगे और राइस भी ऐड करेंगे।
आज का ये वीडियो देख के आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और एक ख़ास बात, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ये एक शेयर करिए, उसके वजह से और भी बच्चे पेट भर खाना खा सकते हैं। और हम तक पहुंचने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए। तब तक के लिए नवाब्स किचन टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।